नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। साथ में सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही होता है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम जो है हमारी कंटिन्यू जो चल रही थी सीरीज फ्लूइड मैकेनिक्स की, उसे आगे की ओर हम निरंतर रखते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन हेडेड ओवर 21 सेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स आईएएस मेंस। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है डिजाइन अ फ्रांसिस टर्बाइन। डिजाइन अ फ्रांसिस टर्बाइन मतलब आपका मेन पेल्टन और फ्रांसिस जो है ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। फ्रांसिस टर्बाइन runner with the following data। यहाँ पे हेड दिया हुआ है 68 मीटर, स्पीड दी हुई है 750 आरपीएम, आउटपुट पावर 330 किलोवाट, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 94%, ओवरऑल एफिशिएंसी 85%, फ्लो रेशियो 0.15, ब्रेथ रेशियो 0.1, इनर diameter of runner is 1 by 2 into outer diameter। Okay, also assume 6% of circumferential area of the runner to be occupied by the thickness by the thickness of the veins velocity of flow remains constant throughout and throughout and flow is radial at exit। Okay, now we have to solve it down। नाउ आपको जो है एक जो है वेलोसिटी ट्रायंगल का नीड पड़ेगा। चलो
ये इनलेट वाला ट्रायंगल है, वेलोसिटी का ही। पॉइंट v1, vr1, vf1, अल्फा वन, बीटा वन, u1, vw1। Okay, now put it the way. Overall efficiency, power upon rho g qh, 0.85 is equal to triple three into 10 cube upon 1009.81 cube into 68. So the value u 0.582 meter cube per second, value over the vf low velocity is equal to हमारा वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2g h के बराबर। सो पुटिंग द वैल्यू 0.15 square root to 9.81 into 68. So the value of flow 5.48 meter per second. Now n is equal to breadth ratio, which is b1 upon d1. So the b1 is equal to nd1, which is zero point 0.1 times of d1. Here we have value over the q pi x d1 b1 vf1, 0.582, 0.94 pi into 0.1 into d1 square multiply 5.48. Here the d1 is to be calculated 0.6 meter and b1 is equal to 0.06 meter. After that we have to calculate the mean blade velocity. So u1 is equal to pi d1 n upon 60, pi times 0.6 into 750 upon 60. So the value of u1 23.56 meter per second. Hydraulic efficiency vw1 u1 upon gh. So 0.94 is equal to vw1 multiply with 23.56 divided by 9.81 into 68. So vw1 is equal to 26.62 meter per second. vw1 calculated. After that tan over alpha 1 is equal to vf1 upon vw1. So alpha 1 is equal to, putting the values over here, 11 degree 38 minute. Then after tan over बीटा 1 इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से हम देख रहे हैं ये सब, सो सिंपल सी ज्योमेट्री है।
VF1 upon whirling VW1 minus U1, which is 5.48 reason over 26.62 minus 23.56. So beta 1 is to be calculated 60 degree 49 minute. D2 is equal to D1 upon 2. The value over D2 is equal to 0.3 meter. Alright, now अगर हम आपका ये आउटलेट वाला पोर्शन है, यह V2 U2 beta 2 VR2 VW2 is equal to 0, whirling is to be 0 फ्रांसिस में, ये ध्यान रखने वाली बात है. Now U2 is 2 pi D2n over the 60. So get the value over 11.78 meter per second. Vf1 is equal to Vf2. Flow is radial. So the Vf2 is equal to V2 tan over the beta 2 is equal to Vf2 upon U2. So here 5.08 upon 11.78. Beta 2 value is to be calculated after this 24 degree 57 minute. Easy. ठीक है, हमारा आसान सा कैलकुलेशन बड़े ही इजी वे में हो जाएगा. Now bouncing down the track, next question. Further proceeded, the following details are available. About Francis turbine. क्या बोलने चाह रहे हैं लेखक हमारे? Diameter are 2.25 meter and 1.5 meter. Width are 0.25 meter and 0.375 meter. The guide blade outlet angle is
The guide blade outlet angle is 85 degree. Both angles both angles with the blade velocity with the blade velocity direction with friction loss is direction friction loss direction friction loss is 15% of the pressure head available between available between the inlet and outlet the inlet and outlet of the runner is of the runner is 60 meter. Calculate the speed and output of turbine. Calculate the speed and output of turbine. Also find the blade. Also find the blade outlet angle mechanical efficiency is 92%. Mechanical efficiency is 92%. Blade thickness blocks blade thickness blocks the flow area by 8%. The flow area by 8%. चलिए सॉल्व करने का पूरा प्रयास रहेगा। यहाँ पे पिक्चर क्लियर कट के लिए हम जो है वेलोसिटी ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं।
एक हो गया हमारा इनलेट, ये को हो गया हमारा आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू u1 v w1, here it is vf1 vr1 and v1 18 degree 85 degree, here it is u2 v2 vr2 beta 2. Inlet and outlet 1 velocity triangles are over here. Now a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा हमारा pi times d1 b1, whose value after calculation 1.7671 meter square, and a2 value is equal to pi times d2 b2, which is to be 1.767 meter square. a1 is equal to a2, vf1 is equal to vf2, and whirling at 1 vw1 is equal to v1 cos 18 degree, and which is 0.95 into cos of 18. vf1, which value is to be v1 sine of 18 degree, whose value is to be 0.309 times of v1. Apart from that, we have the value over mean blade velocity v1 minus vf1 cot of 85 degree. So u1 value is equal to 0.924 times of v1. Now vw1 u1, which is 0.8787 v1 square. These all values are to be calibrated and calculated. Apart from that, head इक्वल करेंगे, तो इनलेट एंड आउटलेट 1 में देखिएगा आपको हेड ऑफ 1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g is equal to h2 plus v2 square upon 2g plus work done plus head loss. Now h1 minus h2 is equal to 60 meter, v2 is equal to vf1 vf2. So here we have the vf2 value, v2 value 0.309 times of v1, and
V2 स्क्वायर 0.309 V1 का होल स्क्वायर. Easy. Now put it that way. H1 minus H2 minus HL is equal to minus V1 square upon 2G plus VW1 U1 upon G plus V2 square upon 2G. Now here the values are to be over. 51 is equal to V1 square upon 2G minus half plus 0.909 55 upon 2 plus 0.8787. After this we have to get the value of V1 और V1 से हमारी कई सारी वैल्यू जुड़ी हुई है. V1 जैसे ही आता है तो हमारा मीन ब्लेड वेलोसिटी आ जाएगा 31.65 मीटर पर सेकेंड. वर्लिंग वेलोसिटी VW1 आ जाएगा 32.57 मीटर पर सेकेंड. देन आफ्टर दैट VF1 VF2 इज इक्वल टू V2 आ जाएगा 10.58 मीटर पर सेकेंड. एलसी में हाथ रोकने नहीं चाहिए. नाउ U1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है मीन ब्लेड है वेलोसिटी की इक्वेशन पाई टाइम्स D1n बाई 60. पाई है हमारे पास D1 है U1 है तो ऑटोमेटिकली n आ जाएगा कितना 290.7 RPM. After that we have to calculate it upon. We have the value over k is equal to k times of pi D1 B1 into V F1. So Q is equal to 0.92 multiply with pi into 2.25 into 0.25 into 10.58. So after this we have to calculate it. The discharge is equal to 17.2 meter cube per second. Then after that runner power which is rho GQH. So after this H value is equal to 31.65 and 32.57 17.2 Q. So putting all these value the runner power is to be 17730 kilowatt is to be calculated over here. And power developed हो गया. Then power deliver हो जाएगा हमारा efficiency of mechanical into runner power. So putting the value getting the answer 16312 kilowatt. U2 is to be calculated easy peasy pi D2 n by 60. Now n की वैल्यू हमने U1 से निकाल ली है तो 21.1 मीटर पर सेकेंड. एक रिलेशनशिप है हमारे पास आउटलेट वेलोसिटी से ट्राइंगल वाले से. क्या
10/180 minus beta 2 is equal to 10.58 upon 21.1. So beta 2 is to be calculated over here 153.4 degree. Easy. After these आपको काम करना है. क्या काम? आपको काम ये करना है, वीएम जो क्लास है ना हमारी वीएम क्लास, उसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रगण तक इसे फैलाना है, पेनिट्रेट करना है. ठीक है साथियों, आपका सेशन इतना ही रखते हैं. जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए. यही ईश्वर से हमारी कामना है. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू साथियों.